Good afternoon, everyone. On behalf of Pushpa Gujral Science City, I welcome you all on this online platform of Science City. So, as you all are aware that under SDR's program, we are covering SDG 13, that is Sustainable Development Goal 13, that is climate change, while celebrating World Environment Day 2022. And you all are aware that this year's theme is Only One Earth. So साथ ही साथ आप लोगों को ये भी बताना चाहूंगी हर एसडीआर प्रोग्राम की तरह ये भी हम लोग जो है वो जॉइंटली कोलैबोरेटिवली कर रहे हैं विद यूएनडीपी. And on this occasion, we have with us Miss Anusha Sharma. She's our expert for the day. So I welcome you, ma'am, and thanks for accepting our invite to interact with our participants. So thank you so very much. And I welcome you on this online platform, and just would like to inform you that we have students from 8th standard till 12th standard. They have joined us. They are really active. They are from different SDRs clubs formed in different schools of Punjab. They are from government schools as well, and from the private also. So I would request you to keep the presentation in English and Hindi. It should be maybe a mix of language, Hindi, Punjabi, English. कोई भी लैंग्वेज जो है तो आप यूज कर लो सो दैट स्टूडेंट्स को थोड़ा जा इजी रहेगा क्वेश्चंस दे लिए वो प्रिपेयर कर पाएंगे अपने आप को. So without taking much time of yours, without any further delay, I request ma'am to take over. Please, ma'am. Thank you so much, and thank you so much for inviting me मुझे यहाँ बुलाने के लिए to interact with the students who have joined, and a very happy World Environment Day 2022 to all of you. I'm very delighted to be a part of this online platform where students can come and interact with experts and also learn about various issues and concerns for environment and sustainable development. So very happy to be here. Thanks for inviting me. And as you said, I see there are a lot of students who have joined this platform, and this is also being live streamed, so a lot of them would be watching. Today, we are going to talk about environment, conservation, and sustainable development. As we said, that the theme is Only One Earth, and I would like to take each one of you through my presentation. मैं कोशिश करूंगी कि मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों languages का use करूं so that लोग सभी बच्चे समझ पाएं. So without wasting any time, I would just like to share my screen. आप सभी को दिख रहा है? Yes, ma'am. It's visible. And okay. Yeah. So as I said, let's first of all, congratulations and a very happy World Environment Day. Sabhi ko ki shubhkamnaएं. Before starting, why it's very important for us to understand why do we celebrate World Environment Day, and ये concept जो है वो कहाँ से आता है. वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जब की शुरुआत 50 साल पहले 1972 यूएन कॉन्फ्रेंस ऑफ द ह्यूमन एनवायरनमेंट इन स्टॉकहोम एक जगह है वहां पर हुई थी, और सभी देशों ने जो इस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था ये सोचा था दैट it is important for all of us to protect our air, our natural resources, land, water, because इन्हीं सब की वजह से हम लोग जिंदा रह पाते हैं. इसी बात को समझते हुए वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की शुरुआत हुई थी आज से 50 साल पहले. उन सभी देशों के लीडर्स जो उस कॉन्फ्रेंस में आए थे उन्होंने इसकी शुरुआत की थी. पहला वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का स्लोगन भी ओनली वन अर्थ था आज से 50 साल पहले, और आज भी वो बात एकदम सच साबित होती है हम सभी के लिए, क्योंकि ये जो धरती है, ये अर्थ जिसे हम कहते हैं, दिस इज आवर होम. दिस इज समथिंग विच प्रोवाइड्स अस वाटर, एयर वी ब्रीथ, द फूड वी ईट, द वाटर वी ड्रिंक एंड एवरीथिंग. एंड इट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस टू सेफगार्ड आवर मदर अर्थ. हमारे लिए बहुत जरूरी है कि ये जो हमारे रिसोर्सेज हैं जो कि बहुत इनफाइनाइट नहीं है, इनफाइनाइट मतलब हमें हमेशा इसी तरीके से मिलते नहीं रहेंगे अगर हम इस तरीके से इसका यूज करेंगे,
So it is very important for us to protect our finite resources. And the campaign for Environment Day 2022 only focuses on that we all come together, we all fight together for cleaner, greener, and sustainable environment to be in harmony with nature. Because if you see the slogan of this Environment Day, it says there are billions of galaxies, there are billions of planets, but there is only one Earth. There is only one Earth where life form exists, where we exist. And that is why it is important for us to take care of our Earth. What is the need? All of us know बहुत सारी इश्यूज हैं, हम सभी रोज रोज बात करते हैं। आजकल हम हीट वेव की बात कर रहे हैं, पारा 45 से 47 डिग्री पहुंच रहा है, उससे भी ऊपर जा रहा है दिल्ली जैसी जगहों पे और भी जगह पे। और ये क्यों हो रहा है? इसके इसके सब बहुत सारे रीजंस हैं। डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों को काटना, इंक्रीजिंग ग्लोबल वार्मिंग, जिसकी वजह से आपकी ग्रीन हाउस गैसेस ट्रैप होती हैं, आप पूरी धरती का पारा बढ़ता है। waste dumping, ineffective waste management, pollution, and a lot more. There are a lot of causes for degraded environment. And throughout the world, lot of campaigns are being organized. बहुत सारी issues पे काम किया जाता है, सरकार काम करती है, civil society organizations काम करते हैं, research institutes काम करते हैं, academic institutes काम करते हैं, local communities जो कि सबसे important हैं environment को बचाने के लिए, वो भी काम करती हैं. So there are lot of things happening and there is a need to conserve our environment. 2015 में पेरिस एग्रीमेंट हुआ, जहां पर सभी देशों ने डिसाइड किया कि हम लोग कोशिश करेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग जो हो रही है, जिससे पूरी धरती का तापमान बढ़ता जा रहा है, उसे थोड़ा लिमिट करेंगे, उसे थोड़ा कम करेंगे, हम एक थ्रेशहोल्ड से नीचे लाएंगे. क्योंकि वो, और ये क्यों किया गया था? बिकॉज हमारी वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए, हमारे इन्वायरमेंट को बचाने के लिए ये बहुत जरूरी था. 2015 में काफी देशों ने, मैं ये नहीं कहूंगी सभी देशों ने, इस अग्रीमेंट को साइन किया कि हम वो सभी मेजर्स लेंगे, हम वो सभी एक्शंस लेंगे जिससे हम इस क्लाइमेट चेंज पर एक्ट कर सकते हैं. पर क्या क्लाइमेट चेंज वाकई में रियल है? क्या सभी लोग इसकी बातें कर रहे हैं या फिर ये एक्चुअल में है? जब हम एविडेंस पे जाएं तो हाँ, ये एक्चुअल में है. हम देखते हैं कि हमारे आसपास के ओशंस वार्म होते जा रहे हैं. जहां पर बर्फ थी, वो बर्फ पिघल के अब फ्लडिंग, इसकी वजह से फ्लडिंग हो रही है. बहुत ज्यादा वातावरण में और बहुत ज्यादा वेदर इवेंट्स जो है वो आपके बिल्कुल बदल रहे हैं. कभी बिन मौसम बरसात हो जाती है, कभी बरसात होती है तो बहुत तेज होती है, कहीं कहीं पे बरसात हो नहीं रही है जहां पर होनी चाहिए, हीट वेव्स हो रही हैं, एंड अ लॉट मोर. देयर आर लॉट ऑफ एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स दैट आर हैपनिंग एवरी नाउ एंड देन. देयर इज डिक्रीज स्नो कवर, सी लेवल में राइज है, आर्कटिक सी मेल्ट हो रही है, ओशंस में एसिडिफिकेशन हो रहा है, plants and animals are suffering, and a lot of people, a lot of animals and plant species are threatened now, and many are going extinct. And there are a lot of other effects also. There is civil unrest, there is drought, there is food insecurity, and a lot more. So all of this, caused due to climate change, our actions over the years. आज की बात नहीं है, हम इतने सालों से एंथ्रोपोजेनिक प्रेशर्स हैं, नेचुरल प्रेशर्स हैं, जिनकी वजह से इन्वायरमेंट में बहुत 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 डिग्रेडेशन हुआ है. एंड इसकी वजह से सबसे first of all we thought, okay, development is important. We do feel development is important, but sustainable development is important. And now we are seeing even our developmental actions are getting affected because of environment inactions, and also because of environment degradation. Our development is getting affected, our economic growth is getting affected. If you look at agriculture, crops, and everything, the whole cycle, everything is getting affected because of environment degradation. And that is why it is important for all of us to now act. We have already lost a lot of time. हम समय गवा चुके हैं. जब हमें एक्ट करना चाहिए था, हमने नहीं किया. और अगर हमने अब एक्ट नहीं किया, we are going to face a lot of problems which we have not even imagined. Now, coming to what you can do.
Government is doing a lot. Government has a lot of programs. Government has several ministries working on different aspects through different programs and schemes through different state governments. They have a lot of initiatives and programs and funding which has been given for environment protection, which has been given for sustainable development to act on different SDGs. The government of India is one of the leaders in the globe, on the globe, to take action on environment protection and sustainable development. And similarly, there are a lot of other institutions, civil society organizations, NGOs hain, state governments hain, and a lot more actors, as I said, academic and research institutions, schools for that matter. Everybody is acting on climate. But since you people are there as a part of this discussion, I would definitely like to talk about what you can do. So there are a lot of actions which, small actions, छोटी छोटी चीजें जिनका हम ध्यान रख सकते हैं सिर्फ हमारे environment को बचाने के लिए. It is important कि आप अपनी जो used चीजें होती हैं उनको discard ऐसे ही ना करें, especially which are of metals and plastics. It is important to donate. It is very important that you buy products जिनकी packaging plastic से ना हो या जिनकी पैकेजिंग बहुत ज्यादा ना हो, ताकि आप बहुत ज्यादा वेस्ट जनरेट ना करें. पहले के जमाने में लोग पत्तल में खाते थे. कुछ लोग अगर आप साउथ में जाएंगे तो आज भी केले के पत्ते में खाते हैं. इट जनरेट्स लेस वेस्ट. सो यू हैव टू सी कि आप किस तरीके के प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं. आप ऐसे कपड़े पहनिए जो सस्टेनेबल हो. आप जब लाइट्स यूज ना कर रहे हो तो उन्हें बंद कीजिए. हम लोग की बहुत आदत होती है कि हम निकलते हैं इधर से उधर, एक कमरे से दूसरे कमरे में या कहीं भी जा रहे हैं, लाइट खुली छोड़ देते हैं. It is important when you're not using lights, shut off the lights. It will save energy. It will save a lot of resources. आप अपने कंप्यूटर या किसी भी लैपटॉप को यूज नहीं कर रहे होते हैं तो उसे बंद कीजिए. आपके घर में अगर वेस्ट जनरेट होता है वेजिटेबल से, फ्रूट से, जो कि बायोडिग्रेडेबल है, बायोडिग्रेडेबल जो मिट्टी में मिल जाता है, सड़ गल जाता है, उससे आप कंपोस्ट बना सकते हैं. अगर किसी के घर के पीछे कोई गार्डन है या कुछ जगह है, वहां पर उसको आप रखकर सड़ा गलाकर, और बहुत सारे तरीके हैं, उससे आप कंपोस्ट बना सकते हैं. आप पानी बचा सकते हैं. जब आप ब्रश कर रहे होते हैं या आप बाथ लेने जाते हैं तो use bucket, don't use showers, and try to save water. Try to save half a bucket of water at least in a day. Try to save water. Don't just leave your taps open. It's important. It is important that you also green your school where you are learning. It is important that you plant trees, organize drives with your school teachers, and participate in eco club activities. I'm sure there are eco clubs running in these schools, and you all are a part of it. You all are very much aware, and the kids these days are doing a lot more than we used to do, frankly, in our days. But these days, kids are aware, and you're taking a lot of actions. So try to take more actions, green your schools, and not with exotic species. बाहर की species use नहीं करनी चाहिए. जो इस soil पे और इस जगह पे बहुत पुराने सालों से species हैं, उन्हीं का यूज करना चाहिए, जिन्हें हम नेटिव स्पीशीज कहते हैं, जो उस एनवायरनमेंट के लिए बिल्कुल सही हैं. वही स्पीशीज आप प्लांट कीजिए. इट इज इम्पोर्टेंट दैट यू प्लांट ट्रीज. इट इज इम्पोर्टेंट कि आप नैपकिन्स, टिश्यूज या कुछ भी यूज करते हैं, आप क्लॉथ के यूज कीजिए. डोंट जनरेट मोर वेस्ट. अपना एक क्लॉथ का हैंकी लेके जाइए. Instead of using a lot of napkins and tissues everywhere, use napkins and do not use plastic. Sometimes carry your own bottle, reusable bottle. हम जाते हैं बिस्लरी की एक बोतल खरीदते हैं, वो एक बोतल हजारों सालों तक it's a non-biodegradable waste. It will stay like as it is. And you have seen oceans, water bodies filled with plastics. A lot of marine animals are getting killed because they are swallowing plastics. It's just a massacre. So it's important that each one of you carry your own bottle, and even if that is of plastic, in case, reuse it. Do not throw it away every day. Walk shorter distances. Sometimes it is not important to just pick up your bike or anything, even for a shorter distance, which is just 500 meters. Try to walk shorter distances. Try to have, if you have space in your balconies, if you have space in your home,
Plant a few, just have a few pots, flowering plants. Try to have a home garden, balcony garden for butterflies and other species. And most importantly, while you people are part of various eco clubs, while you people are part of Pushpa Gujarat Science City, which is organizing this online workshop, because you are the leaders, make the other people aware of such practices. आप बाकी लोगों को ये बताइए कि ये सब करना कितना important है, ये छोटे छोटे steps. आप किसी किसी के घर में अगर एसी है, कूलर है, ज्यादा देर तक ना चला के थोड़ी देर टर्न ऑफ कीजिए. रेफ्रिजरेटर को टर्न ऑफ करना बहुत इंपॉर्टेंट है. छोटी छोटी चीजें आप अगर ध्यान देंगे, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स को मत यूज कीजिए जिनसे बहुत ज्यादा एमिशंस होते हैं, उनको अनप्लग कर दीजिए. अगर आप ये छोटे छोटे एक्शन लेंगे तो इन्वायरमेंट को आने वाले टाइम में बहुत बहुत ज्यादा फायदा होगा आपके छोटे छोटे एक्शन से. And while I am talking to all of you students, all the global leaders are also each and every day acting on sustainable development and environment protection. In 2014, all of us adopted Agenda for Sustainable Development, and we adopted 17 goals that cut across various disciplines. बहुत सारी चीजों की बात होती है, and we call these goals as sustainable development goals. And what are these sustainable development goals? Why are they there? Because we want to support not only the need of the present, but also we want to secure the future of our future generation. And that is why these goals were adopted, sustainable development goals, and we adopted also the agenda for 2030 agenda for sustainable development. Yeah, and मेरी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा ये 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं. पहला गोल है नो पॉवर्टी, सेकंड गोल इज जीरो हंगर एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. एंड अभी हम जो मेन बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 13 व्हिच इज ऑन क्लाइमेट एक्शन, wherein we have to take small steps, छोटे छोटे steps हमें लेने हैं to act on our environment for climate adaptation and mitigation so that we have a safe and a balanced future. A lot of sustainable development goals you can see: sustainable cities and communities, responsible consumption, climate action, life below water, life on land, partnership for the goals, and a lot more. There are 17 sustainable development goals. और मेरी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा पिक्टोरियल फॉर्म में ये सारे goals. There are a lot of pictures you can very well see. And before I close my presentation, I want to talk about this video, and I will play this video. Is everybody able to see? Yes, it's visible, but is it audible? Is it also audible? It's not running, it's on a pause. Yeah, was it audible? I just paused it. Just okay, let's see this video. Certainly we can't hear. Sound is not audible. Sound is weak? It's on mute, yeah. Yeah, now. Yes. Okay? You need a minute? Cool. Listen up, people. I know a thing or two about extinction. And let me tell you, and you kind of think this would be obvious, going extinct is a bad thing. And driving yourselves extinct in 70 million years, that's the most ridiculous thing I've ever heard. At least we had an asteroid. What's your excuse? You're headed for a climate disaster.
And yet every year, governments spend hundreds of billions of public funds on fossil fuel subsidies. Imagine if we had spent hundreds of billions per year subsidizing giant meteors. That's what you're doing right now. Think of all the other things you could do with that money. Around the world, people are living in poverty. Don't you think helping them would make more sense than, I don't know, paying for the demise of your entire species? Let me be real for a second. You've got a huge opportunity right now. As you rebuild your economies and bounce back from this pandemic, this is humanity's big chance. So here's my wild idea. Don't choose extinction. Save your species before it's too late. It's time for you humans to stop making excuses and start making changes. Thank you. So as the dino said, and I'm ready to answer any question which may arise out of the video, we do not have to choose extinction. We have to act now or never. There is only one Earth. We need to save our species. We need to save this Earth, and each one of you have a role to play. Each one of you has a role to play. You can act, and with everybody, we can save our species and this Earth, because there is only one Earth. Thank you so much. Thank you so much, ma'am, for this insightful presentation and very easily understandable. And I hope the students, they must have enjoyed, and they must have understood that what you wanted to convey. So as the dinosaur said in the this short film, short movie, this short video, that extinction is not good. So हमारे लिए भी ये अच्छी नहीं है. And वो दिन आने से पहले जब हम लोग एक एक्सटिंक्ट स्पीशीज बन जाए उसको बचाने के लिए हमें अपना एनवायरनमेंट बचाना पड़ेगा. क्लाइमेट को चेंज होने से रोकना पड़ेगा. वो जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जो उसके एडवर्स इफेक्ट्स हमारी वजह से हो रहे हैं, उनको कम करना पड़ेगा और उन पे काम करना पड़ेगा. So thank you so very much, ma'am. And now I request students, if you have any questions, just raise your hand. I'll unmute you and then you can ask your question. Or maybe you can type in the chat box. अगर किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो आप चैट बॉक्स में भी टाइप कर सकते हो. मैम मेरे पास एक क्वेश्चन अपीयर हो रहा है. आई डोंट नो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है या नहीं. तो ये क्वेश्चन है रमेश की तरफ से. वो पूछना चाह रहे हैं कि मैम हिंदी में लिखा हुआ है द डायनासोर्स जो हैं वो किसकी वजह से हुआ क्लाइमेट चेंज, जो वो एक्सटिंक्ट हो गए. Of course, dinosaurs, so yes, of course, as they said that they were hit by a meteoroid, there was a drastic change in environment. बहुत एकदम से एक change हुआ था environment में, and dinosaurs ice age में, as we know, रहते थे. And because of drastic change in the environment, they went extinct. So that is the reason for those species that we lost them. Okay. So I hope you got answer to your question. And any other question? Lot of students are there. I'm sure there are 100 students. There are 100 students on this platform. तो बच्चे किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, आप पूछ सकते हो. जैसे एक क्वेश्चन ये बड़ा इंटरेस्टिंगली बच्चे ने पूछा कि तब कौन रिस्पॉन्सिबल था क्लाइमेट चेंज के लिए. It was a natural cause. It was not man-made cause. So there's another question, ma'am, that how the drastic change had happened at the time of dinosaurs.
So that was Now natural. the questions are Everybody is interested in Dino's story. Everybody's. So let me tell you, this Dino is the Dino's name is Frankie, and Frankie has also come to India, and it is right there in Gurgaon. And Frankie is making aware each one of you aware and everybody aware that they went extinct, but we should not. And Frankie lost its life because there was a natural change. There was a natural change in weather condition because of the asteroid hit, they said. And because of all of that, we lost that species. They used to live in a certain temperature, but that temperature, everything had changed on Earth, but not because of any man-made problem. Yeah, actually, there's some student, she's saying that only 100 students are there. How will we be able to save 7 billion people of our species? So, So that's a very nice question. But even with these, there are 100 students here. There are so many students here, and in every school, in every university, and everywhere, there are so many students. And only in India, with billions of people who are living in India, we have the pop. I mean, we are the largest, fourth largest economy, and with so many human resources, we definitely can change a lot of things. और ऐसी बात नहीं है कि चेंज नहीं हो रहा है. अगर आप देखेंगे तो बहुत चेंज होना शुरू हो गया है. लोगों ने ये समझना शुरू कर दिया है कि एनवायरनमेंट जो है एक ऐसी चीज है जिसको हम नहीं बचाएंगे अगर आज, तो हमारा कल जो है वो खतरे में है. बहुत सारे गांव वाले हैं जो कि फ्रंट लाइन पे रोज रोज डील करते हैं क्लाइमेट चेंज से. फार्मर्स जिनकी मैं बात करूं, अगर फार्मर सबसे ज्यादा किसान जो है वो हर रोज इस परेशानी से जूझता है, और आज वो इस बात को समझता है कि हाँ, मुझे क्लाइमेट पे एक्ट करना जरूरी है. तो 100 बच्चे यहाँ हैं, अगर वो 100 बच्चे छोटे छोटे स्टेप्स लेंगे तो आपको फर्क दिखना शुरू हो जाएगा. पर यही 100 बच्चे नहीं, वो सभी बच्चे जो मेरी बात को सुन रहे हैं या फिर जो बाकी अपनी टीचर्स की बात को सुनते हैं, इको क्लब्स में पार्टिसिपेट करते हैं. एवरी स्कूल हैज इको क्लब, and all the children who are there in this country, everybody, if they start acting, and even the adults, we can save, I mean, a lot. And I'm sure we can definitely move towards saving this environment. A lot of questions I see. Yeah, so there's another question, and at the same time, Radhika from Government Girls Senior Secondary School, Batala, she wants to ask something. She has raised hand. So first I'll unmute her and we'll take her question, and after that we'll take another questions from chat box. So Radhika, beta, you'll be able to unmute yourself now. Yeah, unmute and ask your question. Yeah, Radhika. Hi, Radhika. Please unmute yourself. Or beta, if you are not able to unmute, then please type your question in the chat box. Drop the question there. I'll take your question from there only. So there's question from Khushi Joshi from Government Girls Senior Secondary School, Batala. She wants to ask that, ma'am, is greenhouse effect due to climate change? Okay. So no, so I would say when greenhouse effect, when it happens, it causes climate change. So when greenhouse effect क्यों होता है? There are a lot of greenhouse gases जो emit होती हैं. बहुत सारी चीजों से, आपके AC से, AC की जो हवा होती है वो बहुत सारे जो emissions होते हैं उससे greenhouse gases generate होती हैं, जिसकी वजह से ये greenhouse gases causes global warming की वजह से ये ट्रैप हो जाती हैं और अर्थ का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज इज हैपनिंग. So there's another question that actually मेरे ख्याल से question correlate कर रहे हैं, दोनों questions same हैं. So ma'am, is global warming also affecting the climate change? Yes, of course, global warming is affecting climate, and it is causing a change in the climatic conditions of Earth, which used to be, and every year there is a change, and now it is evident, you can see it. बारिश बेमौसम हो रही है. We are losing our crops. We are losing a lot of species because of this temperature change over the years. And over the last 10 years, there is drastic change. पिछले 10 सालों में बहुत कुछ change हुआ है. And बहुत fast ये change हो रहा है अब.
And that is the reason that everybody is now worried. And that is the reason we need to take action. So, yes. I think, Khushi, the questions are like interrelated. Is it climate change, global warming, or global climate crisis? It is a global climate crisis. It is a global climate crisis. And that is the reason our honorable Prime Minister has taken leadership. You know, he has been a leader across the globe in taking action on climate change. And India, we should be proud of our country, that India is a country which is a pioneer in conservation and in sustainable development. So there is a global climate crisis. Every nation wants to take step, and our country is leading. And you people are the future of our country. So you are the future leaders, and you should have this in mind that yes, we have to act every day, every moment on climate change, on environment. So there's another question from Himmat Beer from YS Public School. Is asking that, ma'am, should we rather focus on finding habitable conditions on another planet or try to save our own Earth? Like eventually someday the resources on our Earth are going to deplete and we will have to move to any other planet. तो हिम्मत, ये तो वही बात हो गई कि आज मुझे ये नहीं मिला तो मैं उधर चला जाता हूँ. ऐसे आई मीन वेरी क्रिएटिव. आई वुड से यू आर वेरी क्रिएटिव. And if you want to go to another planet, become an astronaut, join NASA and do something, or become an Indian astronaut and do something, please go for it. Please find a planet for our human species where we can do, and we have learned from our mistakes. So I'm sure on other planet we will not make these mistakes. But on the other hand, I would like to say that we need to be on this planet and save this planet. You know, our mother gives us so much. Our mother gave birth to us, and we can't leave. Can you leave your mother? No, we can't leave our mother. Even if she's sick, even if she's having pain or something, we don't leave her like that. So Earth is also like our mother, which gave us everything. The food we eat, we are, born and brought up because our resources were there. But now, when we have given her so much pain, can we leave her like that? No, we cannot leave her like that. We have to be here. We have to act on her illness. We need to take actions to cure her illness, and we need to take care of her. And till the time we are here, we need to take care of her. So don't go here and there finding another mother, but save your own mother. Yeah. So at the same time, as this year's theme is only one Earth, so God has gifted us with one such planet, only one such planet where we are having those habitable conditions where humans can live. And if they're gonna find some other planet which is habitable, they're gonna create mess over there also. So then what next planet we'll have to find out. So it's better that whatever has been given to us, we should keep doing good for this planet. And उसको बचाने के लिए हमें काम करना है. सिचुएशन से भागना नहीं है, हिम्मत रखनी है और काम करना है. So, but I really like Himmat's idea, his creativity. Okay, let's go to other planet. There's another question, and Parminder Guri, he's asking that maybe I'm right or not, but I think so. Only a large-scale plantation is only solution to all problems. So, of course, there is one solution, as you said, Parminder, that large-scale plantation. Of course, this is one solution, plantation or afforestation, as you said. That this could be a solution, and everybody is doing that. Ministry has a lot of schemes, government is acting on it, state governments have taken up a lot of initiatives on this, that we plant species. But it is important to understand आप plant क्या कर रहे हैं. कभी कभी ये होता है, आप देखिए हर एनवायरनमेंट डे पे हर स्कूल, हर संस्था मिलियंस ऑफ ट्रीज प्लांट करती है. उसके साथ दो प्रॉब्लम्स होती है.
which are associated. Number one, कि आप प्लांट क्या कर रहे हैं, क्या आप एक नेटिव स्पीशी प्लांट कर रहे हैं या फिर आप एक इन्वेसिव जिसे हम कहते हैं या एक्सोटिक स्पीशी लाके प्लांट करते हैं, जो कि ज्यादा पानी यूज करती है, जो कि आपके सॉइल को खराब करती है, जो कि उस जगह के लिए ठीक नहीं है। तो किसी रिसर्च इंस्टीट्यूट से बात करना, लाइक पुष्पा गुजराल साइंस सिटी, या फिर किसी ऐसे इंस्टीट्यूशन से बात करना या किसी एक्सपर्ट से बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाट आर वी प्लांटिंग। दूसरी प्रॉब्लम जो मैं आजकल देखती हूँ कि हर एनवायरमेंट डे पे, हर बायोडाइवर्सिटी डे पे प्लांटेशन तो हो जाता है, लेकिन उसके बाद उसका रख रखाव नहीं होता, जिसकी वजह से वो प्लांट्स मर जाते हैं। तो अल्टीमेटली आपके रिसोर्सेज जो आप लगाते हैं, आपका टाइम आप लगाते हैं, वो सभी चीजें बर्बाद हो जाती हैं। सो इसीलिए इम्पोर्टेंट है, प्लांट्स लगाना इम्पोर्टेंट है, और इसके साथ साथ और भी चीजें इंपॉर्टेंट है। एनर्जी सेव करना, डिग्रेड ना करना, वेस्ट को मैनेज करना, रिसोर्सेज को बचाना. देयर आर अ लॉट मोर एक्शंस, देयर आर हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ एक्टिविटीज दैट कैन हैपन for this. But of course, as you said, one and most important step is of course afforestation or plantation, but it is important for us to maintain. It is also important for us to be aware of what we are planting so that it doesn't degrade the environment further. So there's another question. One basic question is there, that what is the difference between climate and weather? So yes, thank you for asking this question. So as I would just like to tell you that weather is, a very short-term atmospheric condition. आज का वेदर अपडेट दीजिए, कल का वेदर अपडेट दीजिए, आज बारिश है, हम एक्यू वेदर और वेदर अपडेट्स गूगल पे टाइप करते हैं तो आ जाता है, आज 23 डिग्री है, कल 24 होगा, कल बारिश की संभावना है. सो वेदर इज लाइक दैट. But climate is, something that is, you can say, it could be an average atmospheric condition of a place over a long period of time. That is climate. It is over a long period of time. जैसे कि इस जगह का climatic condition गर्म ही रहेगा, like desert ka climate, there are climatic zones because we observe the weather condition of that particular place over a long period of time, and then we say कि इस जगह का climate इस तरीके का है या इस जगह का climate cold है, hot है, कैसा है. It does not depend on day to day. हर दिन के हिसाब से चेंज नहीं होता वो, और आपका वेदर हर दिन का, एक तरीके से आप कह सकते हैं हर दिन की जो खबर होती है वो आपका वेदर देता है मौसम की. Yeah, lots of suggestions are also coming up regarding that how we can protect, save our environment. So the three I see Bhupinder saying the 3 rules are will also be helpful: reduce, reuse, and recycle. Definitely, that's the 3 R's we should, and I think all of you study in your study books also that you need to reduce your use of resources. You need to reuse, as I said, resources, and it is very important to recycle. I'm sure there must be a lot of recycling plants, and there must be opportunities also given to school eco clubs to gather waste and also put it in recycling. So, बच्चे और अच्छा होता अगर आप लोग अपने वीडियोस ऑन रखते और अपने हैंड रेज करते, so that हम लोग इंटरेक्शन कर पाते आपके साथ. Yes, I would like to see Khushi, Bhupinder, Parminder who are asking me these questions. I would like to see their faces. Please put your cameras on, so that we हम लोग देख सके आप लोगों को, और आपके क्वेश्चंस जो हैं बहुत इंटरेस्टिंग आ रहे हैं, तो आप लोग इंटरेक्शन भी कर सको साथ में मैम के. So there was another question. Samidhi, I think मैं सही स्पेल कर रही हूँ, Samidhi. Okay, the question has moved. Yeah. Hello, ma'am. I want to add something to all things. I feel that we should also encourage students of all the SDG clubs that rather than organizing poster making competitions or any eternal competition, let us motivate students to go out in the field and work there to save the mother nature. There should be no boundaries set when it comes to environment. Exactly, this is actually, this is not the sole motive to indulge you in certain activities where you will keep just take the paper and pen and will draw something, and
like if we suppose we get 100 entries, most of them sometimes are get rejected, and we select only 2 or 3. It's not the sole purpose, but at the same time जो आप लोगों के अंदर creativity है, या जो आप लोगों के अंदर एक zeal है नेचर को एक जो विजन आपका है उसको हम तक पहुंचाने के लिए, इसलिए हम लोग लाइक ऑन एंड ऑफ कोई ना कोई ऐसा कंपटीशन एक आध रख देते हैं जिसमें आप लोग ऐसे कर सको। बाकी जितनी भी एक्टिविटीज हैं वो आप लोगों के लिए ऐसी एक्टिविटीज इस प्रोग्राम में डिजाइन करी गई हैं जिसमें आप लोग खुद चीजों को फील्ड में जाके ऑब्जर्व कर सको। जैसे कि आप लोगों को वाटर ऑडिट करवाया गया था, वाटर ऑडिट में आप लोगों को बोला गया था आप अपने स्कूल का जो है वाटर ऑडिट या अपने घर का वाटर ऑडिट जो है उसको करके दो, ताकि आपको पता चल सके कि कितना पानी वेस्ट होता है बेवजह, जो कि हम लोगों को वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो ये एक बहुत अच्छी एक्टिविटी थी आप लोगों के लिए। ऐसी और बहुत सारी एक्टिविटीज हैं, जैसे हम लोगों ने वर्चुअल टूर्स रखे हैं साइंस सिटी के, जिसमें आप लोगों को अलग अलग गैलरीज जो हैं उनको विजिट करवाया जाएगा। फ्यूचर में भी हम लोग ऐसा करेंगे। एक हमारा प्रोग्राम अभी 1 से लेके 22 तक हम लोगों ने रेगुलर एक्टिविटीज करी हैं। 1 से लेके 22 तक 22 डेज 22 एक्शंस। तो उसमें सारे बच्चे बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे जो सिर्फ आपको स्केच नहीं ड्रॉ करने या आपको पेंटिंग नहीं करना। इट्स अ गुड सजेशन। अदरवाइज इस टाइम तो मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा ही कंपटीशन लेके आई हूँ। नेक्स्ट टाइम विल डू समथिंग एल्स जो आप लोगों को सच्ची में कुछ बहुत ज्यादा इंटरेक्टिव लगे और आप उसको इंटरेस्टिंग भी लगे और आप उसको खुद कर सको और आपके टीचर्स भी उसमें इन्वॉल्व हो। तो so not many suggestions are coming up, and yeah, so no, I'm so excited to learn that children want to go to the field rather than writing essays, and of course that is also something that is required because it does lead to a lot of awareness. When you write something, you will always remember that. When you're going for a competition, you'll always try to see what is there and what is not, but it's very important for you people to go in the field, and I'm very happy to learn that water audit, things like water audit has happened and students have taken it up. So wonderful, wonderful. Thank you, ma'am. एंड एट द सेम टाइम हम लोगों ने आपको एक और रेन वाटर हार्वेस्टिंग पे हम लोगों ने एक बहुत अच्छा आपको जो है एक्टिविटी करवाई थी, और हम लोगों ने ये भी कहा था कि आप लोग अपने स्कूल्स में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम्स जो है उनको सेटअप कर सकते हो। एंड आई एम रियली हैप्पी, आई वुड लाइक टू अनाउंस द नेम ऑफ द स्कूल ऑल्सो। आई गॉट so many pictures from their side that they did this at their school. I had received these pictures from some school. If the school teacher or some of the students are here, so please, if you can tell us the name of the school, because I can't. Yeah, it's from Government Senior Secondary School, Pakhi Kala, Faridkot. After watching, तालियां तो बनती है उनके लिए, because yes, उन्होंने हमारा जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग का लास्ट टू लास्ट गया था वेबिनार, उसमें हम लोगों ने रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम्स कैसे इस्टेब्लिश करने हैं स्कूल में, तो वो उसके बारे में सिखाया गया था। उन्होंने प्रैक्टिकली इस चीज को किया है, एंड हैट्स ऑफ टू दोज गाइज, क्योंकि कुछ ही दिनों बाद उनका ये जो था हमारे पास पोस्ट आ गई थी और उनके फोटोग्राफ्स मेरे साथ उन्होंने वीडियोस शेयर करे। सो इट्स रियली कमेंडेबल। So just would like to tell you, ma'am, inform you, ma'am, that we had organized a poem recitation competition for the students on the topic environment, and उसमें हम लोगों ने 3rd को हम लोगों ने उसको इवेल्युएट करवाया था। हमारे जो रिस्पेक्टेड जरी मेंबर्स थे उन्होंने इसको इवेल्युएट करा, और जो हमारे पास 2 प्राइजेस जो प्राइज विनर्स आए हैं उनके नेम्स मैं अभी अनाउंस करना चाहूंगी। So the 2nd prize for poem recitation competition goes to Miss Ayushi Khurana from Kamla Nehru Public School, Phagwara. So many congratulations to Ayushi. And the 1st prize goes to Sihana Sachdeva from City Public School. So congratulations to both the winners. And
ये एक ऐसी चीज है जो आपको बहुत मोटिवेट करती है, ताकि आप सिर्फ उनको कविताओं में, अपनी पॉम्स में ना रख के उन चीजों को इम्प्लीमेंट भी करो. सो इसके साथ ही आप Sihana, is that Sihana? Yeah, Sihana. Yeah, Sihana is there. So Sihana, congratulations. Congratulations, Would Sihana. you like to say something? If yes, just raise your hand. I'll unmute you. Okay. So yeah, yes, Sihana is unmuted. Thank you so much, ma'am. Really, this credit goes to my parents, my teachers, who motivated me to take part in this competition. So congratulations, beta. Thank you so much, ma'am. For the future events also. Really, thanks a lot, ma'am. Now there's another announcement coming up, that we are here. I'm going to announce a slogan writing competition on the topic climate change and global warming. Guidelines for this and instructions will be posted in the STRs club groups, जिसमें टीचर कोऑर्डिनेटर्स जो हैं वो हमारे साथ बने रहते हैं, टीचर कोऑर्डिनेटर्स एंड को कोऑर्डिनेटर्स. और आपको इसकी गाइडलाइंस जो है और गूगल फॉर्म शेयर कर लिया जाएगा. लास्ट डेट भी मैं आपको उसी में बताऊंगी ग्रुप में. और आई होप यू विल कम अप विद सम रियली गुड स्लोगन्स. सो थैंक यू सो वेरी मच. So it's time to propose formal vote of thanks. So we are really just before you propose a formal vote of thanks, there was a question and I wanted to answer. Oh, yes, sure. So there was a question from Gurpreet, I guess, which said that, can wastewater of RO be used for watering plants? Yes, you can use that, but since sometimes the TDS is very high, what you can do is you can mix it with some tap water, dilute it, and then use it for watering plants. So that was important. So sorry. No, it's okay. Perfectly fine. Or so as I said, it's time to propose formal vote of thanks. So thank you so very much, ma'am, for enlightening us with your presentation. It was really insightful and knowledgeable, and बहुत easily बच्चों ने understand भी करा. That's why so many questions were there, and बच्चे बहुत curious भी थे सब कुछ जानने के लिए, and there were so many good suggestions also. So it was just because students, they could understand the presentation really well. So thank you so very much for accepting our invite and for interacting with the students. So thank you. And I would also like to thank UNDP because हम उनके साथ ये प्रोग्राम कर रहे हैं, और at the same time नंदिता मैम भी हमारे हर इवेंट में हमारे साथ होती हैं. So इस टाइम अनुषा मैम है हमारे साथ, और उन्होंने बहुत अच्छे से आप लोगों के साथ इंटरेक्ट भी करा. So thank you so very much, ma'am, for being with us. Thank you everyone. Thank you participants for participating in this event and इसको इसमें जान डालने के लिए. बिकॉज मैं लास्ट टाइम थोड़ा सा हो गई थी कि बच्चे जो है वो एक्टिविटी अब थोड़ा सा कम है, मुझे लगता है उनमें मोटिवेशन की कमी आ गई है. बट देन इस टाइम मैं देख रही हूँ सारे स्टूडेंट्स बहुत अच्छे क्वेश्चंस पूछ रहे थे. तो थैंक यू सो वेरी मच फॉर बीइंग विद अस टुडे. Thank you so much, and it was really nice to connect with students, and I would like to be connected with them. And I'll now remember all these names: Parminder, Sihana, Bhupinder, Khushi, everybody, because they asked good questions there. And all the winners, congratulations to you. It was lovely meeting all of you. And you can always reach out to the SDG Club and the SDG Coordination Center. I know, of course, Anamita would be helping you people. But thank you for inviting me. And lovely to meet you all. You are the leaders, so be the leaders. Think of creative ideas, like one of you said that let's move to other planet, but at the same time, do not leave your Mother Earth. It's only one Earth, as the theme says. So thank you once again, and a very, very happy World Environment Day to all of you. Thank you, ma'am. Thanks a lot, everyone. Thank you.